Good morning, students. Today we will start Judiciary, chapter 32 of civics. It is the last chapter of your course, and the civics works has been completed. There are three organs of government, namely legislature, executive and judiciary. It is the third organ or the judiciary that delivers the justice and punishes those who violate laws. न्यायपालिका, यानी कि आपने देखा होगा ये थर्ड ऑर्गन है हमारा। ये जो भी व्यक्ति कानून को, लॉ को वायलेट करते हैं उन्हें जो है पनिशमेंट दी जाता है, और ये जुडिशरी जो है डिलीवर करती है जस्टिस। इन द जुडिशियल हायरार्की ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन below it are high courts in the states, district and subordinate courts are the courts at the district level. In case of a person is not satisfied with the verdict of court, he or she is allowed to appeal to the higher court of the two types of cases. अब आपने देखा कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं स्टेट लेवल पे, फिर सबसे टॉप जो लास्ट में जो है फाइनल जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। ऑन द टू टाइप्स ऑफ केसेस दो प्रकार के होते हैं। सिविल केसेस आर दोज व्हिच डील्स विद द डिस्प्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एटसेट्रा, व्हाइल क्रिमिनल केसेस डील विद द क्राइम्स सच एज थेफ्ट, murder, kidnapping, etc. The Supreme Court located at Supreme Court is located at New Delhi. The Supreme Court is the highest court of our country. It is also identified as the guardian of the Indian Constitution. इसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद नॉट मोर देन 25 जजेस। These judges are appointed by the president on the advice of the council of ministers and the sitting judges of Supreme Court, unless removed early by the parliament. These judges hold office till they are 65 years of age. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, मतलब रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, 65 इयर्स। Jurisdiction of the Supreme Court. The jurisdiction of the Supreme Court means the area over which its legal authority is applicable. यानी कि इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दायरा क्या है। ओरिजिनल jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction for three types of jurisdiction. अब इसमें तीन प्रकार की jurisdiction है। Original jurisdiction includes cases which can only be heard by the Supreme Court. यानी कि वो केसेस जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। Example of such cases include disputes between the union government and one or more state governments on one side and one or more states on other side. More cases dealing with the violation of fundamental rights come under the original jurisdiction. यदि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो किसके अधीन आता है, ओरिजिनल jurisdiction के। In such cases, the court can issue writs for the enforcement of these rights. Next is the appeal. Appeal filed against the ruling of High Court constitute appellate jurisdiction. जब हम अपील करते हैं, जो अपील के द्वारा जो फाइल की जाते हैं अगेंस्ट द हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील फाइल करते हैं वो आते हैं अपीलेट jurisdiction के अंदर। These cases are reviewed by the Supreme Court, which then passes
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। अपील का ये हाईएस्ट कोर्ट है, इसके बाद कोई अपील नहीं है। दैट्स द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। Advisory jurisdiction of Supreme Court refers to its function as an interpreter of the Constitution. It advises the President on various constitutional issues. अब जो है advisory यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक सलाह के रूप में भी काम करता है। ये हमारे प्रेसिडेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। The lower courts also use its judgments and decisions as a precedents while hearing cases. अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो भी अपने फैसले देते हैं। The Supreme Court also performs the function of judicial review, such which involve the examination of laws passed by the legislature to ensure that they are constitutional. Next is the High Courts. The High Courts. The highest court of the state. इनके highest court of law in the state is High Court. Consists of Chief Justice and other judges who are appointed by the President after consulting the Governor of the state and the Chief Justice of the Supreme Court. These judges retire at the age of 62. अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो इसमें होते हैं रिटायर और इसमें 62 इयर्स एज भी होते हैं। A single high court can be responsible for judiciary in 2 or more states. यह पार्ट अब आपने देखा होगा कई बार, अब जैसे गुवाहाटी है तो गुवाहाटी के जो हाई कोर्ट है उसमें 2-3 स्टेट का भी एक हाई कोर्ट मिलकर बना देते हैं। Apart from hearing original cases, the High Court also solves certain disputes concerning the fundamental rights and elections. Elections और fundamental rights से concerning जो cases होते हैं उन्हें भी ये solve करता है। People who are dissatisfied with the verdict of the subordinate court appeal to High Court, which also supervise and monitor them. The proceedings and decisions taken here are recorded and properly maintained for future reference. अब Supreme Court succeeded the Federal Court of India on 28 January 1950. Next is the subordinate courts. Subordinate courts. Subordinate courts. Subordinate courts. These courts work below the High Court and hearing both civil and criminal cases. While the highest civil court in the district is the district court, session court is the highest criminal court. Highest civil court in the district is district court. Session court is the highest criminal court. Criminal court. There are still lower court at the village level, such as Nayab Panchayats. The impartial judiciary and impartial judiciary to ensure equal protection of the law in the country. The existence of an impartial judiciary is necessary. As a result, the judiciary is independent of both the executive and the legislature. Judges in the India cannot be removed from office except through impeachment, so as to ensure that they can be influenced easily. That's all about the judiciary. Now, students, do reading and fill your homework and do your exercise. Thank you. Mm-hmm.